समर से परेशान किया हुआ है, इसीलिए जस्ट गुड. Okay. Any questions on the assignment that I gave you to read about the theories and all, learning theory? Any questions on that? पढ़ाई नहीं Ma'am, अभी, है till ना? now I have not read because of exams, but 2-3 days are more left. After that, I will complete. Okay. अंजलि, शिवांग, यस मैम, आई एम प्रिपेयरिंग बट अभी सारे हुए नहीं है. लर्निंग कुछ कुछ थ्योरी है पढ़ी ना. या नहीं पढ़ी वो यस मैम, जो पढ़ी लिंक है. पे दी? ओके. एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? मैम मुझे तो नहीं है क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो क्लियर है मुझे सारी चीजें. Okay, good. Maybe if you can just brief about those theories to these two. I mean, this would be wonderful because पढ़ा हुआ है आपने थोड़ा सा. Maybe if you can just open up those link and just give them a gist about what are these theories about. Let's start with that, right? So then I'll take you through the examples. यस मैम, तो पहली थ्योरी है जो पैवलोव की है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग की मेनली बात हुई है, जिसमें एक डॉग होता है. तो वो थ्योरी उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि पहले डॉग को एक मीट सर्व किया जाता है. लाइक जब मीट सर्व किया जाता है तो वो अपने आप वो सलाइवेट करने लगता है. तो उसको ऐसा, वो पैब्लो का इंटेंशन ये था कि विदाउट गिविंग मीट टू द डॉग वो सलाइवेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू करनी थी. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहले एक अनकंडीशनल जो हमारा स्टिमुली बोल सकते हैं, जो मीट है जो ऑलरेडी देते हैं तो वो सलाइवेट कर जाता है. बट फर्दर वो क्या करते हैं कि पहले मीट देने से पहले एक बेल रिंग करते हैं, बट उससे वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता डॉग का. देन वो बेल रिंग करने के बाद देन वो मीट सर्व करते हैं, तो डॉग सलाइवेट करता है. ये प्रोसेस कुछ टाइम के लिए चलता है. उसके बाद जब होता है, जैसे ही बेल रिंग होती है वैसे ही डॉग सलाइवेट करने लगता है. तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की एक थी. एक दो और थ्योरीज है जिसमें एक मंकी का है. जैसे मंकी को एक केज में बंद कर दिया जाता है और उसको बाहर निकलने के लिए कुछ 4-5 स्टिक्स होती हैं जो बाहर, वो जैसे एक बनाना रख दिया जाता है केज के बाहर, एंड मंकी केज के अंदर होता है, जिसमें वो बहुत सारे स्टिक्स बाहर वो छोड़े हुए रहते हैं. वहां से वो स्टिक्स गैदर करता है, उसको फिर वो एक स्टिक, लंबा सा स्टिक बनाता है. उसके बाद वो बनाना को वहां से रीच आउट कर लेता है. और फिर एक कैट की भी है जो अभी मैं नाम नहीं याद कर पा रही अभी, कौन से वो साइंटिस्ट थे. एंड प्रोसेस मैं अभी बाद में और इलेबोरेट कर दूंगी क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी इसको ये करने के लिए. तो ऐसी एक अपरेंट कंडीशनिंग भी है जिसमें यही सारे प्रोसेस हैं कि पहले जो अनकंडीशनल स्टिमुली दी जाती है, फिर उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट को वो किया जाता है. उसके बाद जो भी रिजल्ट आते हैं तो उसका इलेबोरेटिव फॉर्म. I've just opened the screen for you so that you can take them through. So पहले वाला जो बताया वो classical conditioning था, right? That dog वाला. Then आता है operant conditioning. Operant conditioning is more about reward and punishment. You can read and explain, Anjali, if you feel like that. मैम बोल के यहाँ पे रीड करूँ या फिर मैं पढ़ लूँ उसके बाद फिर बताऊँ? Whatever way is convenient to you. Yes, ma'am. So this was the experiment prepared by B.F. Skinner, I think.
एंड इसमें ऐसा होता है, एक कैट होती है, उसको केज्ड कर दिया जाता है जो भूखी होती है, आई थिंक। हाँ, सॉरी Rat, Hungry rat. सॉरी rat. सॉरी, रैट कैट। ओके, Rats and dogs तो are two यस, animals जो हमारी तरह इन ओके मैम, humans की तरह behavior ज़्यादा करते हैं, इसीलिए यस most मैम, of the experiments are done. So rats are absolutely the way rats behave, humans also behave like that, and that is why it is called कि हम rat race का part है. We start behaving यस मैम, like them. Yeah. So carry on. यस Yeah. मैम। तो जब वो केज्ड होती है, सॉरी फॉर द नॉइस, देन वो क्या होता है कि उसमें एक ऐसा लीवर होता है जिससे वो उछल कूद करती है भूख की वजह से, तो वो अचानक वहां से क्या होता है, खुल जाता है वो अपने आप। तो वो 2-3 बार जो एक्टिविटी उसकी वो होती है, उसके बाद वो खुद से वो चीजें अपने आप लीवर प्रेस वो होना शुरू हो रियलाइज जाता कर, है। यस मैम, रियलाइज कर लेती है कि यहाँ पे अगर मैं प्रेस करती हूँ तो वो खुल जाती है, उसके बाद जो उसको फूड मिल जाता है। तो यही है, एज ए रिवॉर्ड और पनिशमेंट को तो इस पे ले सकते हैं कि जैसे ही वो खुलता है उसको फूड प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वो अपनी एक्टिविटी से पहले क्या करता है, वो वहां से निकलने का ट्राई करता है, और उसी मूवमेंट के कारण वो अचानक से खुल जाती है, बट फिर वो पर्पसली जानबूझ के वो करने लगती है। ऐसे ही है कुछ पूरा। या सो इट्स मोर अबाउट कि इफ पॉजिटिव reinforcement मिलेगा किसी भी चीज़ के लिए, सो इसका मेन मोटिव क्या था, whenever she was pressing lever there was food coming in, right? So that food acted as a positive reinforcement. So this theory talks about psychological mindset of human behavior, that whenever we are exposed to any of the positive reinforcements we try to change our behavior accordingly. Another example that is given in this theory is about this. If you read this particular paragraph, a branch manager announced in a meeting that a person will get that much of bonus, right? If they deposit this much amount in the bank. So every executive, everybody started working hard to deposit that much money into the account so that they can get bonus. So this is one way of reinforcing, positive reinforcement, which can really change people's behavior towards their learning, towards whatever they want to do, increasing in their morale, boost, motivation, positivity, productivity, profitability, whatever you go, right? So that's how it is called. इसका जो दूसरा पार्ट है जो इसके अंदर शायद ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, थ्रू पनिशमेंट्स. So punishments के through भी we can teach, but there has been said by a lot of lot of psychologists that positive reinforcements must work faster than the negative reinforcement. So it is always better to use these over the above. फिर इसके बाद आती है cognitive theory, which is very interesting. So you can read. Sakshi, you want to read? And then explain the example. हमारा जितना भी एजुकेशन सिस्टम है that is based purely on cognitive theory. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm reading. So, मैम इसमें क्या होता है कि जो पहले से लर्नड वाली चीजें होती हैं, पहले जो हम लोग ब्रॉट एंड वो बॉर्न ब्रॉट अप होते हैं, समय से जो हम लोग को चीजें सिखाई जाती हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। वो हम लोग प्रैक्टिस करते करते हमारी मेमोरी ऐसी बन जाती है कि हम लोग को पता चल जाता है ये चीज कैसे करनी चाहिए। जो एग्जाम्पल एक दिया है क्लॉक वाला, कि पहले हम लोग शुरुआत में तो टाइम देखने नहीं आता होगा, फिर एक बार हम लोग को सिखाया होगा और बिग हैंड और ये लिटिल हैंड के बारे Small में क्लॉक, hands. उसके बाद फिर हम लोग टाइम देखना वो सीख गए होंगे। Yeah. इसी तरह इसमें
तो आपका फिजिकल मोशन कुछ इन्वॉल्व नहीं होता, हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है इस एक्टिविटी में। We have to memorize things Yes, so that our mental processes can be put to use properly. So this is how our entire education system has been, right? Right from schooling to college, right? Most of the people, most of the things that is being taught to us is through this manner. So, because our intrinsic and extrinsic factor दोनों इसमें काम करते हैं. Intrinsic factor is that we have to memorize to understand something. Extrinsic in the sense that you will be seeing certain things to understand how things work. Right? So combination of memorizing and then practically using that. Then आता है social learning theory. Very simple. Again, we do it over a period of time. Like the name suggests, people who are influencers in our life can be teachers, parents, people we grow up with, movies we see, TV we watch, right? Our bosses, anybody who is our. This is called circle of influence. तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी लोग आते हैं दे रियली मेक एन इम्पैक्ट ऑन हाउ आवर लर्निंग हैपन्स वी स्टार्ट imbibing their behavior, we start imbibing and looking at them and start actually putting into what do you call it, putting into role their behaviors in that manner. Social learning theory really is impactful. That is the reason why we say to our kids that whatever they watch, if they are watching a lot of abusive content on television or playing video games which are really not good for them at their age, so obviously they won't be able to understand that the reason why such abuse is happening. So people have been showing their kids. We were having a discussion in mother's group there was a serial, there is a new Netflix serial which has come up, Wednesday, right? So there was an argument which was going on. So though the makers have said that it is good to be watched by 13 plus kids because it is similar to somewhat magical theories and all that. But then when I was seeing these particular things, so that I can, whether I can allow my son to watch it or not, so I just saw one or two episodes. There was so much of abuse in terms of the violence which is there, killing each other, talking of actually bullying and threatening each other. So it was not really good. I don't see that this kind of a content should be going to anybody who is especially in a teenage year or who is moving towards the teenage year, because whatever we see now at this point in time, we are going to go till the time they are at home in supervision of their parents and children, teachers. They will not really do any such thing. But the moment you will lose them ahead, they will obviously going to try and implement whatever they have seen. So that imbibing from social learning theory is really very impactful. Like this happens with us, when we become adult, we do these kind of things on a very I don't know how many times we do that, right, in our lifetime. We see somebody doing something, especially, one particular role that the society plays in social learning theory is, through social learning theory, is basically deciding about our careers, right? Most of the parents, most of the teachers, most of the people are influenced by the society कि ये चार careers है, इनसे पैसा ज़्यादा आता है, इसमें security है. So we go and do that. Either it would be a government job or IAS, PCS, you clear, appear for UPSC, become a doctor or engineer. Even now, after so many years, people have seen that this is not the only way of really growing up and becoming successful still. The mindset is like that, and that is purely because of this particular theory, the impact that it creates. So there are 4 processes in this theory which they talk about. तो पहला है attention process, when they pay attention to something and then they learn. Then retention, right? They saw it, they memorized it, and then they were able to imbibe the same thing that has been happening. Then promoter reproduction process. It is basically putting everything that you have seen to action.
Once you put it into action, immediately you will be able to learn. This is very important for adult learning theory. So if you are teaching some adults, they actually learn from these four processes much faster. Then reinforcement process, the same thing that we studied in conditioning learning. Right? If they see that something somebody has done, a model, or the stimuli has actually got something positive while doing this action, so they will obviously go and do that. फॉर एग्जाम्पल अब बहुत ज़्यादा होता है सोशल लर्निंग में, जिसका एक वो है कि एक गुरु के पास जाते हैं पेरेंट्स एंड दे से कि हमें तो बहुत आराम मिला वहाँ गुरु के पास जाने से, वट एवर आर प्रॉब्लम वाज दे गॉट सॉल्व. So a lot of other parents also get influenced by this. They also start following that guru. Can be anybody, right? So this is a very great example of, because they could see that something positive have happened in their life. There was an incentive. They were looking for a solution to their problems, and somehow that Guruji was able to give them solutions. So without even knowing whether things would be useful for them or not, they start actually following the process. It's called reinforcement process, right? That's how it works. Right? So these are the few theories which basically creates an impact on whatever you learn these days in organization. And on the basis of these four learning theory, we actually create our programs. Whatever program we create, it has been designed like that. So there are a few examples that I've taken out which can help you understand that what kind of, how majority of the organizations are actually creating the programs, training programs, how are they actually getting involved into learning their employees, and what kind of benefits are they providing to people. So for first example is of Axis Bank. So Axis Bank collaborated with Coursera for creating very good learning programs for their employees. Now these courses are offered in subjects such as data analytics, leadership, innovative thinking, and similar kind of subjects. These are offered by top universities across the world, जितनी भी हैं Coursera के साथ जिनका भी tie up है. And these courses can be done on their own self-learning basis. So there are timelines which is scheduled that within 3 months they will have to cover up, or within 2 months they will have to finish this course, but they can do it. So it's a self-learning based course. That whenever they get time, they can go. If they want to utilize their time within office hours, after office hours, on the weekends, whatever way. But it became a compulsory kind of a thing for Axis Bank, and that they collaborated with Coursera. Second है इसका Capgemini. You can see the screen, right? Then Capgemini में क्या हुआ? Capgemini is very employee-centric organization, right? Like it is mentioned here. We have worked very closely with Capgemini, so I know. So they really take good care of their employees in everything. So their learning and coaching department is also very, very always on the rolls. They keep doing something or the other. So what they do was they equip the employees to compete in a highly competitive manner, because they know they are competing with big four organizations, which is EY, Deloitte, all these companies. So they have to really ensure that everything that their people are learning should be in the very good innovation, creativity, different kind of technologies that is coming in. So this is how their thing was designed. Right from people when they were hired in the organization till the time they are there. So career progression, everything is being done there. Then here Infosys. Infosys obviously we know. Whatever is written here, other than this, Infosys has created their own internal training center where they keep giving different trainings to employees. If you can read the third line, it's bridge program is what they call it. So there is a compulsory program for people who have spent good number of years in the organization. Though here it is written 3 years, but they don't really give it to the in practice.
3 साल वालों को नहीं मिलता है। 4-5 साल जिन्होंने कंपनी में बिता दिए हैं, and the managers feel that these guys are really good and they have done very good, because at individual level these guys are always programmers or coders. They keep creating some programs, so they are part of the team by creating some programs and all. So what happens after 3-4 years in IT sector, anywhere in any organization, people start getting bored of working as a programmer or coder for a long time period. So then they either go or leave the organization for a better organization in a better role like project management and all, so that they can manage the entire process and learn and grow, or they leave organizations for further studies. So to solve this particular problem, they have created their internal in-house university kind of a thing. It's a basically large learning center that they have, where they provide to give them alternate career growth as well. That you complete this course, and then whatever area you want to, as per your interest and skills, whichever area you want to grow, you can easily grow. I've seen a lot of people moving towards recruitment, IT recruitments and all, from being programmer for 4, 5, 10 years, and then obviously they give hike. So Infosys initial salaries are very less, but the moment you are growing up and you are inside the organization, their career progressions are really good. Then next company is Oracle. A lot of technical and professional courses they provide. And in case you are, as an organization, as an individual, you want to go out and do something of your own, so they provide reimbursements also for your learning and development that you have taken. They work very closely with, because Oracle is a US based organization, large majority of their center is in US, so that's why they are more in touch with Stanford Center for Professional Development. So Stanford University obviously is one of the best in the world, and they provide good upskilling to employees, and all this is being paid by the organization. Then TCS, again, TCS runs a lot of courses within the organization, again with their own faculties and everybody. It's called mentoring services as well, and they call their programs as Career Hub. Then Trident, so they want people to learn analytics really fast, and that's why they have created. So, and they call this initiative as You Learn We Pay, where you have to go and upskill yourself, and the company will pay for you. Then Wipro, again different kind of programs. They have a 6 months long program within the organization, where people can be equipped into different things: data, algorithm, visualization, modeling, etc. Then another program is called Vista. Majorly, this gives specialization in data analytics to people. It's equivalent to PG course. Then different organizations go for open source learning and development programs. So for example, they really let people go out and learn. So Accenture, Amazon and Google, all three. And these courses are not just for their employees, it is open for people outside as well. Right? So these are few examples of how learning programs are designed, keeping in mind, and these are not just brand names. These companies have become brands purely because they follow these good practices of taking care of their employees. Because as an employee, if you're joining an organization, like sir was telling you about Samriddhi right now, right? So Samriddhi was a very good student. Also, she had very hardcore zeal of learning things at a very fast level. Right? She wanted to get involved into everything. She did almost, I don't know, 6, 7 internships in various organizations, and then she joined a full-time job also with Byju's for a few months. Somehow during that COVID time period, she joined that organization. Did not go very well,
I mean, till the time she was there, it was really good, but then Baiju stopped performing after that. And then she joined some other organization. So her thing was that she wanted to learn all the time, initially, since her graduation days itself. So she started following, I think, YSI since she was in college, and she started learning. So her internships, whatever she has learned, she has practiced also in all those organizations. So I was in touch with her since last till I think 3 4 months back. Then we stopped talking. Somehow I think she was not well during that time. He kept asking for something. She did a lot of freelancing work for us as well, in training, in hiring, recruitment as well. So the point what I'm saying is that if you as an employee wants to learn, the satisfaction that you get from learning or growing, or your professional and personal development, if the organization is not really catering to that, then obviously you will never be satisfied for a long term period in the organization, no matter how well you are paid, because the kind of technology it's changing at this time period, last 5 years have shown that if you're not really putting time towards learning and upskilling yourself on a time to time basis, then a lot of things that you have learned in previous years are not going to be used in future. Right? Imagine us, who did MBA 16 17 years back. अब जो पढ़ा था हमने, obviously it is not really much relevant. Basics obviously has not changed, but a lot of things. So all these things to teach you, or when we take a lot of training and development programs, we also have to study and go through the entire process of how and when people are really motivated, and the way they actually take keen interest in learning and development. If that is not there, if you're not upskilling yourself, you won't be able to answer the questions, you won't be able to give the knowledge, you won't be able to impart the right kind of technology and training to employees, right? So that's very important. Especially one area which is very important for all of you to study is technology, anything to do with, right? So if you want to create a good career in any of the field, not really maybe in HR, any other field that you want to, you have to upgrade yourself with whatever the latest tools and technology that is really helping you out. Right? So, for example, HRIS system, what kind of HRIS systems are available in the market? What are they offering? Like we studied about LMS, so what kind of learning and development systems on platforms where they can provide softwares to teach. Right? So you have to be aware of it. For example, Coursera is one. Right? So how Coursera is working, you need to go into the depth and study how Coursera is really helping out people. Similarly, there are many other tools like Coursera. So how they are helping people in organizations to upskill themselves, and how what kind of growth opportunities are open for them. Right? That you have to study. Right? So this is all about learning and development from my side. In case you guys have any questions, you are feel free to ask that, or else we can move to the new topic. Yes, ma'am. Please clear. All clear to everyone? Yes, ma'am. Good. So just give me a second, I'll just open up. So let's take you to strategic HR.
Okay. So this is not my PPT. This is basically from McGraw-Hill. My PPT is not there in this computer, so I'll show you that tomorrow. And I'll cover this up in here. So let's start from asking questions and knowing. What do you feel that what is strategic human resource? All three of you. What do you understand by this term? When we include strategy or strategic to human resource management, what does change? How does it change? What changes? What does strategy means? I'm asking question. What is strategy as per you? Forget about strategic human resource management. What is this Yes, word ma'am. Can I strategy? try to? Ma'am, to manage any kind of resource in management or apart from the management field also, we need some plan and strategy to work upon efficiently and effectively. Hmm. And for that, we also need some teamwork, or individually we can also perform some tasks. But the prior work of everything is strategy and plan. So we plan some work, how to do, when to do, how much effective it will be, how cost effective it will be. So planning, covering all the dimensions, be it financial, in terms of time, our mental work, physical work, whatever is needed to run any institution or company or to manage any thing, we need some strategy and plan. And I think that will be called strategic. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सारी चीजें जो भी हमारे HR वाले फील्ड में आ जाती हैं उससे रिलेटेड एंड इन जनरल स्ट्रेटजी एंड प्लान टू इम्प्लीमेंट ऑन एनी वर्क. I think it was a great definition. So Okay, no, good. At least good try. Sakshi, Shivang. Yes, ma'am. So strategy, like it is basically a plan, which a company or anything plan which is made to achieve some goals or aims. So in strategic HR, I think that plans and our plans or procedures are like set up for HR to do or achieve certain HR goals, What kind of goals? like to solve industrial disputes and to manage all the peoples, to uh, um, recruit and to make their process cost effective. Okay. Shivang, what's your idea? Mm, like Sakshi said, long-term goal for the development of organization, or we can say for employee development. You know, strategy word has come from military. This is basically used in all over the world in military, army, and all that. So keeping that in mind, suppose they have to go for a war.
or this is a enemy which has invaded our privacy, and they want to ensure that things are safe for our country. So they create strategy for that. So what does that mean? What strategy do you think an army or a military would be creating? Ma'am, Planning. preparation about the situation. Right. So What one will is be needed? preparation about the situation, correct? Second, armed and equipment. To know our strengths and right. weaknesses also. Good to know about strength and weakness. Arms and ammunitions can be resources, right? What So all the kind of position? resources. Yes, ma'am. Not only about us, but the other party also with whom we are going to fight with or Going for a war. involved in war. Having war with, Yes. correct, right? So the Yes. strategy basically talks about the situation. We have to understand that. We have to understand the goals and objective. Then the resources that is required. So not just arms and ammunition, how people would be placed, who are the key people who have experience and exposure to different wars. If we can put them as advisors or team leaders or whatever, you know. So this is how strategy actually works. So strategy, yes, is a long-term planning that happens for the organization so that the organization can meet their vision and mission that they have kept simply. So what human resource management can actually help them out, organization for understanding in how human resource management has to play strategic role in the organization. So what kind of a strategic role human resource management can play? Now think from this perspective. आपने पढ़ लिया मैन पावर प्लानिंग पढ़ लिया, यू स्टडीड अबाउट रिक्रूटमेंट, ब्रिंगिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑनबोर्डिंग कराना. So Then, for he can plan to recruit people in less cost, like cost effective method. okay, we And can bring in cost effective methods in whatever we are doing, right? What else? How else can we become more strategic? Most of the organization, when we talk about strategic human resource management, usually it is the leadership development. The leaders in the human resource management who are keen part of the organization. Major part of understanding and creating strategic human resource strategies for human resource management is to understand business through and through. That is where most of the employees, most of the normal HR people lacks. You know, when they don't understand how the profitability is increased and improved. Right? Though we have been playing, all the HRs in the world actually play a very crucial role in bringing the right kind of talent for the organization. But if you won't know whether the talent that you're bringing in the organization is capable of bringing how much productivity and profitability into the organization, and through that one contribution, how much is the P&L getting affected, right? So we are basically the largest contributors towards the P&L of the organization. किसी भी organization का जब भी आप profit and loss account निकालोगे, आप सबसे पहले बात करते हो कि लोगों ने क्या sales और revenue earn किया. So sales and revenue, चाहे कितना अच्छा प्रोडक्ट हो, कितने अच्छे प्रोसेसेस हो कंपनी के, कितना अच्छा प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, if you do not have good people, it would be very difficult to create a selling, I mean, you know, revenues for the organization. So as a human resource managers, what we are doing is we are already doing a very large strategic work in terms of bringing the right talent for the organization. But where we lack as human resources is not knowing how much is the contribution this one individual is going to make in the organization. We don't relate, we don't create. शुरू में हमें थोड़ा बहुत पता भी होता है हायरिंग के टाइम पे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने टाइम वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, वी डोंट रियली फोकस एंड सी दैट इंडिविजुअल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. आप ऑलरेडी एक साइकिल मैनेज कर रहे हो, right from bringing the people into the organization from the exit to the exit, right? पूरा आपकी के ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही आता है. बट अब अगर आप इसको प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस के साथ नहीं एडजस्ट करोगे, कंपनी के P&L के साथ नहीं समझोगे या वो उसको रिलेट नहीं करोगे, दिस इज देयर जनरली लैक. उसी लैक को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम इज क्रिएटेड यूजुअली इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम बिजनेस प्रोसेस HR या BPHR भी कहते हैं.
right? So their work is to ensure that everything that is related to business is also related to HR. और होता ही है. If you are bringing a person in the organization, right from the person is inside, वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वहां से लेकर कितना खराब कंट्रीब्यूशन किया है, फिर उसका अप्रेजल कितना कर रहे हैं हम, उसका इम्प्रूवमेंट प्लान बना के दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको, then we are giving them remuneration and compensation. So everything is linked with business anyhow. But how much is an individual's understanding as an HR is called strategic human resource management. So how it learns, basically strategic human resource management helps you in these things. Describing the difference between strategy formulation and strategy implementation. कैसे आप strategies बनाएंगे, कैसे implementation करेंगे. Then list the components of strategic management process. क्या क्या चीजें आ सकती हैं strategy को create करने के लिए. The role of HRM function in strategy formulation of the organization. Linkages between HRM strategy formulation, typologies, and issues. Right? This is what we are going to talk about in this chapter. So this is basic introduction. Strategic management includes having the goal to deploy and allocate resources for competitive advantage. Right? Till the time you're not really making your employee or resources more competitive in terms of being competitive from your competitions, doing very well in every area that you have hired them, you're not really bringing too much of the satisfaction to the organization. Second is integrally involving the HRM function. जो भी मैंने बताया कि you have to integrate HRM function with understanding the entire business, how business is being run. Then using a business model to create value for customers. This is how strategic management works. What is the business model? It works on 4 concepts: fixed cost concept, variable cost, margins, and gross margins. So you'll have to understand that at length. इस केस में हम नहीं जा रहे हैं because it will take 1-2 entire classes. I'll give you the brief of कि क्या क्या होती है cost, but not really into the details. So what is strategic management without HR? Strategic management as a process क्या होता है? पढ़ो and try and explain. Ma'am, it is an approach to addressing the competitiveness challenges an organization faces. By it, we can understand that in many terms, every institution faces some challenges like budgeting can be, finding right candidate can be, machinery advancement can be, and advancement of technology. If you are hiring some person in our company, then giving them right work and making what can I say? Like getting out of their best, like they're growing or not. So I'm not able to. I'm so sorry. No problem. अगर English में difficulty आ रही, you can talk in Hindi for that time. That's not an issue. No, ma'am, I'm not able to conclude it in a right way. So I should, I think, about it. Okay. Shivang, Sakshi, what do you understand from strategic management? Ma'am, in strategic management, we used to like address first our the organization competitive challenges and the goals, and after that we used to make certain plans and policies for achieving that goal. And in the last phase we do. Into cohesive whole, right? Cohesive whole means for the entire organization as a whole. See, the idea is अलग-अलग departments हैं organization में. When we talk about organization goals, हम किसी एक entity के goal की बात कर रहे हैं. But what happens जब organization के अंदर अलग-अलग functions या अलग-अलग departments बन जाते हैं, that means you have different departments who are talking largely about their own goals कि ये complete करने हैं.
इन सब में कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल कहीं इधर उधर चला जाता है. सो दैट कोहेसिव गोल इज दैट company creates strategies and policies so that these strategy and process can integrate one department to another, and all of them together can actually talk always about reaching that organization goals. Because most of the people, most of the organization do not understand till the time we are talking about organizational goals, we are not able to achieve our personal or functional goals also. So it has to be holistic, top to bottom approach. Top is organizational goal, then functional goal, then personal goal. So this is how things are done. And every time when you are hiring somebody in the organization, that's how you can create strategic human resource management. जब भी आप हायर कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में और फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, you need to understand that your personal goal somewhere is being addressed into this functional and organizational goal. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का विजन और गोल है ही नहीं बड़ा होने का, कभी भी दूर जाने का, या प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने का, या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का, लर्निंग देने का, पता चल जाता है थोड़े टाइम में जब आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हो. तो बोलते कुछ है, करते कुछ है. देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज गोइंग वेस्ट. Though I am in love with my job, my role, I am putting in my 100% effort, but somehow the organization is not giving full, what do you call it, time and energy to my goals. So then people start getting disengaged from the organization, and that's when majority of the time people start leaving the organizations as well. Right? So this is where HRM basically comes into the picture. Then third point इसके अंदर जो कह रहा है major की developing strategies for achieving the company's goals in light of its current environment. Very importantly for every organization is to see what kind of current environment, and that environment is not just internal organization environment, it is about the political and the government which is involved. You will see a lot of policies start changing the moment we have a government change, and it is not just in India, across everywhere in every country. Whenever there is a change in the government, there are different policies they bring to the picture just to show that this is the change that we are planning to do. As and when these changes starts coming in, the environment will also start changing. So then a lot of organization will have to see, they have to change their strategies a little bit so that they can really take care of these programs into that, right? अब strategic HRM क्या है? The pattern of planned human resource development and activity deployment and activities intended to enable an organization to achieve its goals, so that you can actually utilize, because you are taking care of one of the most important resource जिसको अभी तक कहा जाता है, though it's not really resource, but the most important people for who can achieve whatever the organization has actually set for themselves. Then it's a process to address the organizing competitive challenges by integrating goals, policies, action, sequence. दोनों को मिलाकर अगर आप उतना देख रहे हैं तो ये बन गया आपका strategic HRM. Now there are two components in strategic management: strategy formulation and implementation. Formulation is important, where you are actually creating and designing the strategies, and implementation much more difficult, how you are actually going to in getting it implemented by people to understand. So this model basically gives you the entire idea of how actually it's being done. So strategy formulation happens from external analysis, opportunities and threats. Opportunities and threats के अंदर क्या आया? Current situation, कौन सी गवर्नमेंट है, उनकी क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, क्या क्या लेबर यूनियंस के साथ साथ क्या चल रहा है, कौन से सिस्टम्स हैं, किस तरीके से उनके साथ गवर्नमेंट ने साइन अप किया हुआ है, क्या कंडीशंस लगाई हुई हैं, दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. दैट्स फॉर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दोनों देखना है. अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स में जैसे आप दिल्ली गवर्नमेंट को बेटर बनाने के लिए what our people are doing it, just giving you a state ka example, they have increased daily wage of unskilled people to 18,000 16,000 something, जो 5 साल पहले शायद 7-8 हज़ार समथिंग था. So from 8,000 to directly 16,000 in last 6-7 years is a huge change. कीपिंग इन माइंड कि बहुत सारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पीपल ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दिल्ली इज मच हायर. So that is the reason why they have done this. Especially after COVID, they have realized
A lot of laborers and unskilled workers are coming from different states and they need some place to stay and look after themselves. So that's how they have taken all these opportunities as a good opportunity and started utilizing in the strategies. Right? तब उससे अब ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा झटका लगता है क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है डेली वेज को हायर करने के लिए. Right? तो वहाँ पर ये थोड़ा सा वो है, बट उससे फ़ायदा ये है कि जितना उनका डेली वेज की जो आपका लॉ है आप उसको अगर फॉलो करते हैं, so people always feel happy with the organization and they put in their entire efforts into making the organization successful. जितना dissatisfied होंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कैसे होता है? राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, स्ट्रैटेजिक चॉइस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, देन वहाँ से आपका निकल कर आता है ह्यूमन रिसोर्स नीड्स. अगर आप ह्यूमन रिसोर्स का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं. HR प्रैक्टिसेस, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एनालिसिस, डेवलपमेंट, व्हाटएवर यू कॉल इट, यू हैव ऑलरेडी डन दैट. प्रैक्टिसेस ये आ गई, कैपेबिलिटी, स्किलेबिलिटी, नॉलेज आ गए, एक्शंस के अंदर आपके बिहेवियर और रिजल्ट्स आ गए, आपकी परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आ रही है, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. सो दिस एंटायर थिंग बिकम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस. स्ट्रैटेजिक चॉइस जो आपने ऊपर उसके अंदर पढ़ा, कैसे वो बनाई जाएगी, वेयर टू कम्पीट, हाउ टू कम्पीट एंड विद व्हाट वी आर कम्पीटिंग. It is always taken into consideration that majority of the strategy that we are creating so that हमारा competitive edge बाकी सब जो इंडस्ट्री में कंपनीज हैं उससे ज़्यादा बराबर रहे या बड़ा रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, यू सी लॉट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक के अंदर. अगर आप शार्क टैंक देखा होगा इंडिया वाला, कभी कुछ भी कोई भी एपिसोड, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को मना कर देते हैं कि वी विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू. किस बेसिस पर मना करते हैं कि सपोर्ट नहीं करेंगे? कई बार मना कर देते हैं इसीलिए कि प्रोडक्ट को प्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. प्रोडक्ट को प्लेस करना क्यों मुश्किल है कुछ इंडस्ट्रीज में? फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नया कोलगेट, कोई एक नया वो ले आते हो, टूथपेस्ट मार्केट में लॉन्च करते हो, तो इमेजिन मेरे मुंह से कोलगेट निकल रहा है. तो हमारी ब्रांड की स्ट्रैटेजीज इतनी स्मार्ट उन्होंने की हुई है कि आप कभी भी कोई प्रोडक्ट का नाम लेते हो तो ब्रांड का नाम निकलता है. So that means that brand is placed automatically so well. इतना अच्छे से उन्होंने मार्केट शेयर ले रखा है कि नए प्रोडक्ट को लॉन्च होने में और इस्टेब्लिश करने में बहुत साल लग जाते हैं, और साल जितने ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी. So that is the reason why these people stay away from investing in the companies जो मार्केट में प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है. चाहे आप नया प्रोडक्ट ला रहे हो, उसके अंदर आपने फ्लोराइड नहीं डाला, फ्लोराइड नहीं डाला, जो बहुत हार्मफुल है. जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि हम जितने भी ये वाले टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. राइट, स्लोली ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है. ऑब्वियसली, मतलब आई एम श्योर कि इतना तुम लोगों को आइडिया होगा कि जितना केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर गेटिंग मोर सिक, हार्ट डिजीजेज, कैंसर, इसीलिए इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, प्योरली बिकॉज ऑफ दिस केमिकल्स दैट वी आर यूजिंग, नॉट जस्ट इन टूथपेस्ट, लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. इसीलिए स्लोली वापस हम वेदास में जा रहे हैं, वापस ऑर्गेनिक की तरफ इसीलिए जा रहे हैं. सो इवन इफ यू आर क्रिएटिंग एन ऑर्गेनिक टूथपेस्ट, उसको स्टिल प्लेस करने में टाइम लगेगा, जैसे पतंजलि को लगा. नाउ पतंजलि इज अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, right? They have huge backup from government also in terms of giving them subsidies, also in terms of marketing strategy. कितने फराटेदार तरीके से, I mean, so fastly they did their marketing and they were really able to reach to the masses. उनके लिए आसान क्यों था masses तक पहुंचना? क्योंकि वो already इतना बड़ा योगा स्थल चला रहे थे, right? They had huge amount of people who were following them. तो इसीलिए उनको पतंजलि का टूथपेस्ट एस्टैब्लिश करने में टाइम नहीं लगा. बट अगर कोई और छोटी कंपनी आती है जो ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके पास रिवेन्यू ज़्यादा नहीं है, मासेस उनको ज़्यादा फॉलो ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, तो फॉर एनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन इट वुड बी डिफ़िकल्ट. सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी, वी नीड टू सी वेयर टू कम्पीट, किसके साथ आप कम्पीट कर रहे हो और किस तरीके से आप कम्पीट कर पाओगे या नहीं. ऑन दैट बेसिस यू डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है,
या तो बहुत ही एकदम आपका प्रोडक्ट यूरेका वाला हो कि यस यू आर डूइंग समथिंग रियली रियली वेल, आपने सैंपल करा लोगों के ऊपर, फ्री सैम्पलिंग जल्दी फ्री होती है, और उस सैम्पलिंग से ये पता चला कि योर प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, लोगों के दांत सफ़ेद होने शुरू हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सारे के सारे कोर इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर हैं सब ऑर्गेनिक हैं, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं देन यू विल बी एबल टू प्लेस इट रियली वेल, लेकिन सैंपल है आपके पास, रिसर्च है आपकी, तो उस पर पैसा लगाने में कंपनीज को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर वो नहीं है सो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू डू एनी सच थिंग फॉर एनी न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। हमारा क्या रोल है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज। एनी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नीड्स टू क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरा का पूरा सपोर्ट दे सके। Right? There are three ways of doing that: one-way linkage, two-way linkage, and integrative linkage. इस तरीके से लिंकेज दिए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज में आपने स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर ली, उसके बाद आपने एचआरएम फंक्शन को बता दिया। टू वे लिंकेज है कि कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं उसके अंदर, या उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो टू वे लिंकेज हो गया। इंटीग्रेटिव लिंकेज होता है तब जब दोनों चीज़ें एक जैसे एक साथ मिलकर काम करें, that your entire function of human resource management is 100% in touch with strategic management of the organization, completely end to end, right? Not situational based, right? Usually हम क्या करते हैं, strategic human resource को लेकर आते हैं कब, किस टाइम पे compensation decide करने हो तब, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना हो तब, जबकि ऐसा होना चाहिए कि टिल द सिंस द टाइम द पर्सन इज कम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन टिल द एग्जिट, उसका कहाँ कहाँ कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आपको नोटिस में रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसका बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल है कि आपको किसी ने हायर करने के लिए बोला, यू आर इन एचआर, आपके डिपार्टमेंट हेड ने आपको बोला कि आपको हायर करना है, आपने सिंपली क्या किया, जॉब एनालिसिस लिया, पोर्टल पे डाला या वट एवर जॉब पोस्टिंग करी, इंटरव्यू लाइनअप करने शुरू कर दिए, वट एवर वे, ये हो गया नॉर्मल हायरिंग। अब इसी को हम स्ट्रैटेजिक हायरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? यू एज एन एचआर विल आस्क क्वेश्चन कि हाउ मच इम्पैक्ट दिस पर्सन इज गोइंग टू क्रिएट ऑन द फंक्शन, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कि इसका जब हम हायरिंग कर देंगे उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज द टाइम लाइन दैट दिस पर्सन इज नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, so that you can at least try and bring that person as early as possible, because any number of days it gets delayed, there is a huge cost involved into the business, right? जितने भी लेट हायरिंग होगी उतना ही उसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर भी पड़ेगा, so that has to be understood by the HR. Third thing that is to be understood by HR is that जितने भी लोग आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आ रहे हैं, whatever hiring that you are doing, in long term perspective, what is the role that they are going to play? So their career pathing, उनका career पूरा path दिखाना, उनकी career progression, how that progression will happen, that has to be shown. Until the time you are not clear, and not just in terms of the designation change or title change, in terms of the entire career progression, कि क्या benefits उनको ज़्यादा आगे मिलेंगे और जाके अगर वो कंपनी में ग्रो कर रहे हैं, हम उनको किस तरीके से और ग्रो करा पाएंगे, उनके अंदर टीम मैनेजमेंट कितना होगा, कितने फॉरेन टूर्स मिलेंगे, व्हाटएवर जो भी चीज़ कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स हैं वो सब क्या क्या उसके अंदर रहेगा। सो पे पैकेज, जॉब रोल, कंप्लीटली ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, तभी हमारा इंटीग्रेटिव लिंकेज बन जाता है स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कैसे होगा ये तो कर ही चुके हैं, आई डोंट नो व्हाई टू रिपीट। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? फॉर्मुलेशन कर लिया हमने, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मिशंस, विजन, सब कुछ करके। इम्प्लीमेंटेशन के लिए 5 वेरिएबल्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो एज एन HR, how you can actually create the entire organization into strategic human resource management is by creating hierarchies. अगर हायरार्कीज क्लियर नहीं होंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि मेरे को रिपोर्ट किसको करना है, कहाँ से मेरे पास इंफॉर्मेशन आनी है,
10 लोग मेरे सर पे बैठे हैं और 10 के 10 ही मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, इट विल नेवर बी सक्सेसफुल. In long term, such organization really fall flat. So it's very important, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, कंपनी मेट्रिक स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, या फिर हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, whatever structure any organization is using, you need to create that structure for their organization, right? That's the first part of implementation of strategy. Second is HRM task. जितने भी आपके टास्क हैं ऑन अ डेली बेसिस, फंक्शनल बेसिस पे, वो सब किस तरीके से आपने लिखे हुए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, सो दैट यू आर टॉकिंग द बिजनेस लैंग्वेज. आपका रोल जो है वो भी एकदम बिजनेस रोल में बदल जाए, राइट? सो योर टास्क डिजाइन, स्पेशली सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड रिवॉर्ड्स एंड सिस्टम्स. बहुत सारे ऑपरेशनल टास्क रहेंगे हमेशा जिनको आप कभी भी क्वांटिटेटिव नहीं कर पाओगे एचआर में. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, कि आपने एक दिन में कितने लोगों की ग्रीवेंस सॉल्व करी, ये तो आप लिख लोगे, और किस तरीके से सॉल्व करी, यू विल नेवर बी एबल टू राइट दैट. उसका कोई वो नहीं होता, बिकॉज एक ग्रीवेंस आ जाता है या एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एचआर के पास, उसको शायद सॉल्व करने में 5 दिन लग जाते हैं. योर टाइम इज गोइंग इन टू दैट. आपने उसमें तो लिखा कि एक कंप्लेंट आई थी, पर उस एक कंप्लेंट में 5 दिन गए कैसे, वो आप किसी को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, राइट? टिल द टाइम यू हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स रेडी. सो वो थोड़ा बहुत सिस्टम एचआर में कभी भी क्वांटिटेटिव हो ही नहीं सकता, दैट विल ऑलवेज रिमेन क्वालिटेटिव. बट यू विल हैव टू सी वेर एवर यू कैन रियली मेक इट क्वांटिटेटिव, कहीं सब जगह पर भी, that it becomes really easy for an organization to take HR seriously. Then types of information and information system, which I was just talking before we started this particular subject. You need to know in technology how, with the use of technology, you can really create your systems, HR systems, in much more better way, ताकि लर्निंग फास्ट हो जाए लोगों की. पीपल विल बी एबल टू अडेप्ट टू सिस्टम, बिकॉज जितना हम आईटी को या इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा टाइम आप एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स में बिता पाओगे. सो दैट हैज़ टू बी सीन. जितना एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स में टाइम जाएगा लोगों के साथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू विल बी एबल टू क्रिएट गुड टैलेंट पूल फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड. इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या आपको वेरिएबल्स उसमें रखने हैं अपने, जो अभी पढ़ा है ऊपर, राइट? उसको इस तरीके से दिखाया. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जैसी भी जानी है इस तरीके से जाएगी. टास्क डिज़ाइन कैसे होंगे आपके, रिवॉर्ड सिस्टम, सिलेक्शन, ट्रेनिंग किस तरीके से हो रहा है, परफॉर्मेंस निकल कर आनी चाहिए. कर क्या रहे हैं हम, प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रैटेजी. कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए अपने काम करना है. This is how you are going to implement in HR. ठीक है? Yes, ma'am. अब वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होता है? So, जितने भी आपके HR पॉलिसीज के प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस हैं, that you are creating a link between, starting from job analysis and design to labor relations programs, everything has to be, so that is vertical alignment. इस तरीके से काम हो रहा है आपका सारे फंक्शंस के साथ. This we have already done. फिर आता है पे स्ट्रक्चर का, तो फिर क्या हो जाता है. लेबर का भी मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है. एनी टाइम्स गवर्नमेंट चेंजेस, लॉट ऑफ लेबर रिलेशन चेंजेस, उन सबको देखकर आपको उस तरीके का वो करना है. सो एम्प्लॉयज एन एसेट और एक्सपेंस, दैट विल हैव टू सी. अगर डेली वेजेस बढ़ गई हैं तो वेदर दिस एम्प्लॉय इज बिकमिंग टू बी अ कॉस्ट फॉर यू और इट्स एन एसेट. यू हैव टू सी दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे होता है, देखने के लिए कि उस एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर. कि अगर आप सपोज उसको 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर रख रहे हो, क्या वो जो प्रोडक्टिविटी दे रहा है आपको ऑर्गेनाइजेशन में, वो 20,000 रुपये से ज़्यादा की है या नहीं है. एट द मिनिमम 20,000 से, डिपेंडिंग अपॉन विच फंक्शन दैट पर्सन इज, सपोज सेल्स में है तो एटलीस्ट 5 से 10 गुना ज़्यादा हमें उसको बेनिफिट मिलना ही चाहिए. सो वो 20,000 का एम्प्लॉय मिनिमम हमें 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के बीच का रेवेन्यू देगा, तभी फ़ायदा है.
उसको रखने का, वरना इतना कोई फायदा नहीं है. So that's how it is done. So that's directly for sales. ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग उनका परसेंटेज होता है कि कितना उनको सैलरी से ऊपर का काम देना है, सो दैट 20,000 रुपीज सैलरी एक्चुअली दे आर. क्योंकि हम कहते तो हैं कि उसकी एक्सपेंस 20,000 रुपये विच इज सैलरी, बट उससे ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल और फ्यूल भी यूज़ करेगा, वो सैलरी में नहीं गिना हमने, वो ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर रहा है, मीटिंग्स के लिए जाएगा, सो दे विल, ही और शी विल यूज़ दैट. Then ACs, electricity, all those things, whatever time period 9 hours they are in the organization, they are using everything, उसका cost होता है. ऐसे ही food cost होता है, बहुत सारी ऐसे indirect cost होती है जो इसके अंदर add हो जाती है, right? So fixed cost क्या हुई उसकी? The salary. Indirect cost उसके अंदर और क्या increase हो गई? जो ये सब चीज़ें हैं, travel and food and other things, reimbursements and all, तो वो कहीं ना कहीं खर्चा इन सब चीज़ों को मिला के ज़्यादा पड़ जाता है. That's how we do the कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो पहले मैंने बताया था, फिक्स कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिलाकर. देन सेकंड क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ मच योर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. अब किसका रोल है डिसीजन मेकिंग में और किसका रोल नहीं है, दैट हैज टू बी सीन वेरी वेरी क्लोजली. थर्ड, व्हाट राइट्स डू एम्प्लॉयज हैव. अब कंपनी के अंदर आ गए हैं एम्प्लॉयज, यू नीड टू इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय शुड नो व्हाट आर द राइट्स दैट दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एचआर को खुद ही नहीं पता होता कि एम्प्लॉयज राइट्स क्या है, क्योंकि हमने एक्ट ढंग से नहीं पढ़े होते हैं. इसीलिए मैं बार बार जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं, आई ऑलवेज टेल यू कि एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, हम गलत पेपर पे साइन करा लेते हैं एम्प्लॉयज से, और वो पेपर लेकर कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में चला गया तो हमारे लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है. फॉर इंडिविजुअल ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो यू विल हैव टू सी दैट वेदर द पर्सन वट एवर राइट्स दे हैव, हम उसके राइट्स के हिसाब से जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाया है, जिसको हम ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, उसका पूरा का पूरा वो तरीका अच्छे से बना हुआ हो, कीपिंग इन माइंड ऑल द एक्ट्स. I'll show you certain examples of how we create offer letter and appointment letter, so that every information that is required for people to know should be there in advance. क्योंकि ऑफर लेटर जब साइन करते हैं तो एम्प्लॉय आपको जाकर ये भी बोल सकता है, आपने अगर सपोज लीव पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं लिखा एम्प्लॉय को ज्वाइन कराने से पहले, आपने एम्प्लॉय को ज्वाइन कराने के बाद ऑन बोर्डिंग पे टाइम पे सोचा हम बता देंगे, अब वो साइन तो पहले कर चुका है कागज़ पे कि मुझे जॉब पसंद है, आप उसको आने के बाद बता रहे हो, कल को उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है छुट्टी में, उसने जाके आपके ऊपर केस कर दिया, फिर आप क्या करोगे ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यू थॉट कि आपने सब रूल्स फॉलो किए हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी विच इज़ लीव पॉलिसी, हर एक एम्प्लॉय को पता होना ही चाहिए, और हर एक एम्प्लॉय का हक है उस पर, इट्स देयर राइट टू टेक लीव एज पर द गवर्नमेंट रूल, बिकॉज ये गवर्नमेंट का रूल है. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीथिंग दैट यू आर क्रिएटिंग एज एन एचआर पॉलिसी, जो भी लॉ से रिलेटेड है, शुड बी देयर इन द ऑफर लेटर इटसेल्फ, ताकि वो ज्वाइन करने से पहले वो पढ़ के साइन करे उसमें. दैट्स हाउ यू सेफगार्ड योर ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज. अगेन, जैसे हम एम्प्लॉय राइट्स की बात कर रहे हैं, कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स एम्प्लॉय, दैट हैज़ टू बी देयर. कि सैलरी टाइम पे जा रही है या नहीं जा रही है, व्हाट इज़ द डेट ऑफ द सैलरी, वो भी मेंशन होना चाहिए. डेजिग्नेशन, कौन से जगह पे वो काम करेगा. अगर आप सपोज किसी को हायर कर रहे हो मुंबई में, राइट, आपने उसके ऊपर अपना लिखा है आपका हेड ऑफिस मुंबई में है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने का नोटिस पीरियड है, एम्प्लॉय ने, आपने बोल दिया एम्प्लॉय को कि अब आप मुंबई में तो पोजीशन रही नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट दिल्ली में आ गई, आपको वहाँ जाना पड़ेगा. सो इसको भी सेफगार्ड करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या कहती है, दैट यू हैव टू क्रिएट ऑफर लेटर, उसके अंदर आप पहले ही लिख दो द प्लेस फॉर योर वर्क वुड बी मुंबई, बट डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन द ऑर्गेनाइजेशन कैन आस्क यू टू मूव एनीवेयर. इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन सेफ हो गई, एम्प्लॉय ने उसको पढ़ लिया, सो दे आर रेडी, तभी उन्होंने उस पेपर को साइन कर दिया. इफ दे वोंट बी रेडी, दे वोंट साइन दैट पेपर, राइट? So your responsibility of employee is very importantly to put in the letter. Then the approach a company takes in making these decisions can result in successfully achieving its short-term and long-term goals. So whatever these things are, अभी तो मैंने एक example दिया है लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस के, इसके बहुत सारे एक्ट्स हैं, उन सबसे रिलेटेड जो भी होगा, that you will have to see and understand and keep using it throughout. Until the time you're not really using it,
for the benefit of the organization and employee both, till the time your role is not really strategic in the organization. हमें क्या लगता है पता है, ऑर्गेनाइजेशन में जब हम होते हैं, एनी एचआर फॉर दैट मैटर, हमें लगता है कि अभी हमने कंपनी की कॉस्ट बचा ली किसी भी तरीके से, पेपर साइन करके एम्प्लॉय को जल्दी हायर करके एंड ऑल दैट. बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वो एम्प्लॉय जितना डिससेटिस्फाइड होगा उतना ही चांसेस हैं कि वो हमारे ऊपर केस कर सकेगा. केस तो चलो बहुत ज़्यादा हाई उस पर चला जाता है, बहुत एक्सट्रीम वाली चीज़ है. बट एनी डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय राइटिंग 10 बैड थिंग्स अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इक्वली बैड. रेपुटेशन, गुडविल, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड सब खराब करता है. So it's always good that transparency in strategies implementation should be created thoroughly. फिर आता है स्ट्रैटेजी टाइप्स क्या होती है, कौन कौन सी इस तरह की स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं. तो इसमें आता है पोर्टर्स कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब है कि आप कोई भी किसी भी चीज की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट. इसका कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है यहाँ, छोड़ो, आई डोंट नो क्यों नहीं है यहाँ पे. As I said, it's not my PPT, right? It's Tata McGraw की, इसलिए मुझे भी yeah, now this is important. So strategy implementation में what role human resource management can play? जनरली 4 तरीके की ये स्ट्रैटेजीज होती है, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जिनको हम कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है. ये ऑर्गेनाइजेशन रियली इम्प्लीमेंट दिस. उनका नाम है कंसंट्रेशन, इंटरनल ग्रोथ, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड डाउनसाइजिंग. अब इन चारों स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा एज एन एचआर क्या रोल हो सकता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजी मीनिंग कि जो भी आपका करंट लेवल ऑफ स्किल आपको चाहिए कंपनी के अंदर, आप वो मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. यू आर गिविंग पीपल फेयर कॉम्पनसेशन ऑन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को ABC 3 स्किल्स चाहिए ज़्यादातर, योर एम्प्लॉयज शुड बी एबल टू शोकेस दो स्किल्स एट ऑल द टाइम. That's when we call it current skills concentration strategy, right? Your concentration is on creating a direct talent pool which is important for the organization, so that जो भी हम business कर रहे हैं, जो भी product and services हम sell कर रहे हैं, that business is being run in a proper manner without any losses being occurred, right? इसको हम कहते हैं concentration strategy. That throughout the year जो भी employee छोड़ के गया, आपने immediately उसका replacement दे दिया organization को. उसी का मतलब है कि स्किल वो कहाँ से आ गई, अगर कोई छोड़ गया तो आपने वो स्किल रिप्लेस कर दिया immediately on a short term basis. That is there. Second is, if you think that somebody is not really fully trained to do that job, then you are providing them proper training so that they learn and start implementing that. इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, जनरली हमारा इंटरनली हायर करना, इंटरनल ट्रांसफर्स करना, प्रमोशंस करना या करियर प्रोग्रेशन का पार्ट आ जाता है, राइट. सो ये हो गई हमारी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज. इंटरनल हायर कैसे होता है, इधर थ्रू रेफरेंस और यू क्रिएट एन IGT विच इज इंटरनल जॉब पोस्टिंग, कि आपके पास एक पोजीशन निकली ऑर्गेनाइजेशन में, यू फील कि बाहर से हायर करने की बजाय अपने ही जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को किसी को मौका दे देते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए. सो यू पुट इट ऑन नोटिस बोर्ड और योर पोर्टल एंड ऑल दैट. सो दिस इज हाउ यू हायर इंटरनली फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स. And then transfer and promotion obviously is an internal thing. As and when your requirement is there, you are transferring people from one branch to another or you're promoting individual. Then compensation rate towards achievement, कि आपका हर टाइम पे ग्रोथ स्ट्रैटेजी कहती है when you are growing people in the organization, you need to pay them well according to their achievements and productivity and profitability they have given. And then third is joint ventures require conflict resolution. बहुत सारी कंपनीज जॉइंट वेंचर्स में जाती हैं. जॉइंट वेंचर्स के टाइम पे क्योंकि हमारे कल्चरल डिफरेंशिएशन होते हैं, प्रोसेस डिफरेंशिएशन होते हैं, उसके कारण कन्फ्लिक्ट्स बहुत आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ के अंदर. कुछ एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारी कंपनी बड़ी है, हमने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है, तो हमारा ज़्यादा इसके अंदर चलेगा. बट ऐसा नहीं होता है. व्हेन 2 कंपनीज आर जॉइनिंग टुगेदर, सो देर आर डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक लेवल पर होता है, इंडिविजुअल लेवल तक पहुँचता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं.
So human resource can play really good role in this particular growth strategies where they can ensure the transparency so that less conflicts are happening. Even if conflict is happening, your conflict resolution time is really good. 24 hours, 48 hours, you need to fix that thing. A third role in strategy implementation, HR can really play well. This because I have done really, I got a good chance to do this in the organizations where I worked. सबको नहीं मिलता है because depending upon organization, mergers and acquisitions होते हैं. But if you get a chance, you actually learn change management, organizational development, and right on ground. दो different organization का different cultures का merger होना. And then utilizing strategy accordingly. So this is how mergers and acquisition give you much more benefit in terms of organizing, strategizing your HR in a different manner. यहाँ क्या होते हैं सबसे पहले people issues can cause problem. Like I just said पहले वाले में जो भी acquisition होगा वहाँ पर people problem बहुत आएंगी, बहुत मतलब extremes में. So then you will have to always ensure that everything should be transparent, communication should be really good, and company hierarchy should be really immediately created. Because आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर तो आपने पहले से ही क्रिएट किया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब उसमें कोई और मर्ज हो गया, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल चेंज्ड, स्ट्रैटेजी जो उनका लीडरशिप डेवलपमेंट था वो चेंज है, तो उनको कहाँ प्लेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. सो यहाँ इन चीज़ों में HR कैन प्ले रियली गुड रोल इन स्ट्रैटेजी क्रिएटिंग. वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन पे आया तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन एंड पीपल इश्यूज कैन बी रिजॉल्व फास्टर. सेकेंड आता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स. लाइक आई जस्ट सेड, टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अलग अलग है, उनका अमैलगमेशन कैसे होगा, कैसे उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, राइट. उनका कल्चर एकदम डिफरेंट था, हो सकता है कि वो लोग बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहनते हो, टाई वाई के साथ सूट बूट पहनकर. सेल्स टीम हमारा बहुत स्मार्ट कैजुअल वाला है कि लोग सिर्फ फॉर्मल शर्ट्स पहन रहे हैं, नॉट रियली नो टाइज एंड ब्लेजर्स एंड ऑल दैट. सो उस कल्चर को एक दूसरे के साथ कैसे मिलाओगे, किस तरीके से उनकी कैमराडरी होगी, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है. So there should always be a fine line, thin line between कि ना उनकी साइड लो ना इसकी साइड लो. Then you'll have to come with different strategies so that a midway can be designed. Then conflict resolution. So conflict resolution, again there is an act on conflict resolution. You need to ensure that you know the entire process of conflict resolution thoroughly, which we will do tomorrow. This conflict resolution and grievance solution is very important for every HR to understand and know. Now many organizations have started actually creating different course modules for conflict resolution also. फिर है डाउनसाइजिंग. डाउनसाइजिंग अगेन नॉट एवरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गेट्स टू डू दिस. डाउनसाइजिंग इज एज द नेम सजेस्ट, लोगों को निकालना, बेसिकली ले ऑफ. व्हेन यू आर एक्चुअली आस्किंग पीपल टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट इमोशनल, द मोस्ट हर्टफुल थिंग दैट एन HR हैज टू डू इन देयर एंटायर करियर. There was a time period in 2008 when the entire world was going through recession. During that time, many of the organizations in India did this. एक उस टाइम आया था, अब आ रखा है पिछले साल से थोड़ा सा रिसेशन. गुड थिंग इज नॉट देयर मच इन इंडिया, बट IT सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एडटेक सेक्टर इज गेटिंग अफेक्टेड. लाइक यू सॉ, बहुत सारी कंपनीज ने 20,000 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए. एडटेक तो बहुत ही ज़्यादा बेकार उससे जा रहा है. एन अकेडमी, बाईजूस 3,000, 4,000 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए. सो दिस इज कॉल्ड डाउन साइजिंग. Now downsizing is a strategy implementation. क्यों strategy implementation करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को? It's not always because कि वो profitability में नहीं है. Sometimes they have to show higher profits and that's when they start doing downsizing. क्योंकि उनको अपने बुक्स के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना है, सैलरीज और जितना भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर कॉस्ट जा रहा है वो ज़्यादा है. सो व्हाट दे हैव टू डू इज, ये ईजिएस्ट वे हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने प्रॉफिट्स को एकदम से ऊपर दिखाने के लिए. एंड समटाइम्स दीज पीपल आर एक्चुअली नॉट डूइंग मच ऑफ द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी दिखाई देने लग जाता है पुअर परफॉर्मर्स या एवरेज परफॉर्मर्स. सो दैट्स व्हेन ऑल्सो डाउनसाइजिंग हैपन्स. So downsizing says that tends to fall short of meeting companies' financial and organizational objectives. Generally ऐसा होता नहीं है.
जो भी आप देख रहे हैं अभी आजकल, जो पिछले साल से अभी तक हो रहा है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट इज डूइंग वंडरफुली वेल, राइट? उनकी वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, इतना बिल गेट्स इतना रिच बनता चला जा रहा है। सो जब वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, सो दैट मीन्स कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, तभी उनका वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। और फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि फाइनेंशियल गोल्स मीट नहीं हो रहे हैं? बिकॉज उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ था कि पिछले साल से इस साल हमारा ग्रोथ 10% बढ़ेगा, तो 10% नहीं बढ़ा, तो उस 10% को पूरा अचीवेबल दिखाने के लिए दे स्टार्ट डाउन साइड, and it has a negative effect on employee morale and productivity. Obviously people do not feel, anybody for that matter will never feel good कि जितने साल उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं उसके बाद उनको अगर निकाल दिया जाता है विदाउट मच रीजन, so obviously it's not really a good practice. Then the HRM function must surgically reduce the workforce by cutting only the workers who are less valuable in the performance. Usually the right way of doing strategy implementation for downsizing is this, the third point, but generally होता नहीं है ऐसा। पुअर परफॉर्मर्स के साथ बहुत सारे एवरेज अबव एवरेज परफॉर्मर्स भी चले जाते हैं, प्योरली बिकॉज सैलरी ज़्यादा ले रहे होते हैं कहीं पर, या उनका रोल फिट नहीं बैठ रहा होता है कंपनी के अंदर। देन नेक्स्ट इज अर्ली रिटायरमेंट प्रोग्राम्स यूजुअली रिजल्ट इन रीहायरिंग। तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं डाउन साइजिंग को? रिटायरमेंट प्रोग्राम्स देकर। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू अबाउट ऑल दीज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, कैसे वो लोग करते हैं। My father was in BHEL, so in 2008-9 they were facing a lot of problems also, being government organization also. तब उनको भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था रिसेशन से। सो व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड ओपनिंग VRS सिस्टम। VRS इज वर्चुअल रिटायरमेंट ले लो। उससे क्या होता है वर्चुअल रिटायरमेंट से, दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, तो अगर आपकी सर्विस के 10 साल और बचे हैं, 60 ईयर्स में सपोज आपकी रिटायरमेंट होती है, यू आर 48 49, तो आपके 10-12 साल बचे हैं, तो वो 10-12 साल की पेमेंट पहले दे देती है। दैट्स व्हाट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डू। तो उससे लोगों को थोड़ा ये बेनिफिट हो जाता है कि एज तो हो ही गई है 48 49, 12-15 साल का पैसा एक साथ मिल रहा है, उसके अलावा PF का पैसा भी हो जाएगा, ESI का भी, बहुत सारे और भी उनके बेनिफिट्स होते हैं, तो ह्यूज चंक कम्स टू देम। So that becomes a very क्या कहते हैं attractive package for the employees for adopting to downsizing. तो वहाँ पर उन लोगों को कर दिया जाता है। So lot of people during that time, my father's lot of colleagues started taking this VRS opportunity. So this is how lot of the organization do that. अब इसका और एक और बेनिफिट है, क्योंकि उनकी एज 48-49 की है, सो दे आर एबल टू रीहायर बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके पास ये ऑप्शन भी रहता है। यहाँ से तो आपको बहुत बड़ा सिवरेंस पैकेज मिल गया, 10-12 साल की सैलरी एंड ऑल अदर बेनिफिट्स, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और अब आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डबल बेनिफिट भी है। देन लास्ट, सर्वाइवर मोरल इश्यूज। मॉरल इश्यूज आते हैं बहुत ज़्यादा। जो लोग रह जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको हमेशा फियर रहता है आफ्टर द डाउनसाइजिंग कि हमारा नंबर तो नहीं कभी लग जाएगा, इनसिक्योरिटी हो जाती है और बहुत सारी डिफरेंट तरीके की चीज़ें। सो उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए देन HR हैज़ टू प्ले वेरी वेरी क्रूशल रोल इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करेंगे, उस कम्युनिकेशन का रिजल्ट क्या रहेगा। उसका इफेक्ट ये भी रहता है कि बहुत लोग अपनी तरफ से भी रिज़ाइन कर देंगे क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे आर ऑलवेज इनसिक्योर। सो वो सब चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो सब लेकर चलना पड़ता है ऑलरेडी। इसका पूरा प्लान, जैसे हम HR प्लानिंग में करा था हमने मैन पावर प्लानिंग के टाइम पे, यहाँ पर भी डाउन साइजिंग के टाइम पे हम मैन पावर प्लानिंग दोबारा कर लेते हैं, कीपिंग इन माइंड कि इतने लोग तो हमने सपोज 100 लोगों को हमने निकाला, अदर देन दिस 100 people you will always take 25-30 people will leave on their own as well and you cannot stop it. So वो सब लेकर चलना पड़ता है। ये this is how a lot of companies saw layoffs and separation from 2009 to 2013. Various organizations इतने इतने एम्प्लॉयज को निकाला, उससे क्या क्या उनको मिला। इसके तरफ और स्ट्रैटेजीज जो बनती हैं, लेट्स टेक दिस टुमारो। इसके साथ जो मेरी PPT में ना उसमें एग्जांपल्स हैं। आई विल गेट माय अनदर लैपटॉप टुमारो, और घर पे नहीं है आज, इसीलिए आई विल नॉट बी एबल टू शो इट।
So I'll show you that. We created last year we did this exercise in emergent and intended strategies, जिसमें हमने strategies खुद बनाई थी in class discussion करके. So you will see कि उसका impact कितना अच्छा आता है. So emergent strategies होती हैं जो आप खुद grassroots level से अपनी company के लिए बना सकते हैं, right? The strategies that you can. Intended strategies होती है generally जब आप situational based आपको बनानी पड़ती है. कोई situation आ गई suddenly and then you have to create. Just because you have to take a right or wrong decision during that time, so you start creating that. So emergent and intended strategies के example भी हैं मेरे वाली PPT में, a lot of examples that we did, and then we'll do this exercise also tomorrow. Do try and read about it. It's a very very important topic. I know थोड़ा सा theoretically जा रहे हैं अभी हम लोग, तो इसीलिए boring लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारी information जा रही है जो समझ नहीं आ रही होगी. But when you start implementing, when you actually change your role from HR to strategic HR, जब हमारा transition हुआ था initial 3 साल काम करने के बाद, then I got an opportunity directly कि implementation में ही जाना है. I mean because I was leading CHRO and director HR role पे, so ये सब काम ही करने पड़ते थे. Then you don't really do the other operational work of HR. So this work actually takes a lot of time and energy into creating something for the organization जो बहुत सालों तक useful रहेगा. आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, आप ऐसे स्ट्रैटेजिक गोल्स बना रहे हो कंपनी के लिए जो आने वाले टाइम में बहुत लोग उसको यूज करेंगे, राइट? उसी के ऊपर शायद उसको बेहतर कर दे या उसको वो कर दे, बट बिकॉज यू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट कि आज का जो प्रॉब्लम है ग्रास रूट लेवल पे जो इमरजेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जाती है, दिमाग बहुत खपता है, बट देन इट्स वंडरफुली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. So you leave lot of things for the organization. So ये सब हम कल पढ़ेंगे, rest of the portion. जो फिगर दिखाई थी ले ऑफ्स एंड सेपरेशन वाली, वो ये एक्चुअली ये है. कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 8000 ले ऑफ इवेंट्स किए थे जिसमें इतने सारे एम्प्लॉयज को सेपरेट किया गया था ऑर्गेनाइजेशन से. सो इमेजिन 2009 से 2013 तक कितने ज़्यादा लोगों की जॉब्स गई थी. lot of business got Ma'am, shut. layoff and separations are different. सेम चीजें. ले ऑफ इवेंट्स, सेपरेशंस मतलब separations can be VRS also, downsizing also, right? Layoffs is basically when you're asking people to leave the organization directly. Separations तो एम्प्लॉय डेथ के कारण हो सकता है, रिटायरमेंट एज आ गई उससे हो सकता है, VRS आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया उससे हो सकता है, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया रेजिग्नेशन से, वो भी हो सकता है. सो दे आर सेपरेशन. एम्प्लॉयमेंट में ब्रेक देते वो भी ले ऑफ में ही आता है ना? ब्रेक देना नहीं आता ले ऑफ में. अगेन दैट इज सेपरेशन. Layoff मतलब whenever you are asking an employee to leave the organization, simply. छोटे मतलब I have एक a दो doubt. एग्जाम्पल्स. Ma'am, by downsizing, employees can we get profit in long term? Like it is a right way to show the profit of any company. सी राइट और रॉन्ग वेज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है ही नहीं कोई भी किसी भी. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज वन सिंगल मोटिव, किसी का भी आप ले लो, टू अर्न हायर प्रॉफिट. एंड टू अर्न हायर प्रॉफिट दे कैन डू एनीथिंग. दे हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स बाय फॉलोइंग द गवर्नमेंट रूल्स. हर कंट्री के जो उनके रूल्स हैं, तो अब अमेरिका में जो रूल्स होंगे वो उनको लेकर फॉलो करते होंगे, जो हमारे इंडियन रूल्स हैं विल हैव टू फॉलो देम. If you're not following those guidelines of governance and ethics and implementation of labor acts, तो फिर आप गलत कर रहे हो, then it is wrong. But if you're following them, हमारा लेबर क्या कहता है, लेबर लॉज जो कहते हैं, एक्ट कहता है कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय को निकालना है तो आपको उसको जितना दिन का भी आपने नोटिस पीरियड लिखा है उसने उसकी पैकेज देना पड़ेगा, 2 महीने का, 3 महीने का, वॉट एवर. तो वो आपको देना पड़ता है, वो 2-3 महीने की सैलरी, एंड देन यू आस्क पीपल टू लीव. So that's called separation package. Separation package उसको कहा जाता है जो किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाता है.
So yes, long term में downsizing can become very profitable for organizations. That's why they do it. Ethically, not really good practice. But those ethics are not written down anywhere. इसीलिए जो organizations या employee ये सोचते हैं that they are working in a family an organization, वो बिल्कुल दिमाग में रखना ही नहीं चाहिए. Because every organization, no matter how much have you worked for the organization, you always are indispensable. आप हमेशा replaceable रहते हैं for that organization. Especially in a country like India, you're always. So don't get emotionally attached to the organization. Be in love with your work that you do. Do your work really good in an honest manner. And obviously downsizing can keep happening. And never one hire, question I have. never take decisions. Yeah, when you're hiring somebody, for example, अब जैसे Byju's और Unacademy के बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया. But you are hiring them for your organization, so never judge कि उनको इसीलिए निकाला हुआ कि उनकी performance खराब है. That is a wrong parameter. So this is a whole process of understanding that downsizing is not really just for the employees who are poor performers. You can always give them second chance to re-establish. In fact, there was one organization, I think Jet Airways, some organization, very recent past, लिखा भी होगा उसका कहीं मैंने. उन organizations ने क्या किया when they were doing downsizing, so they insured. जैसे LinkedIn पे उन्होंने announce कर दिया that because of whatever reasons in business, we have to let go of these many people. So if there are other organizations hiring, we are recommending that you hire these people from us. So इसको कहते हैं outplacements करना. So that also can be done by the HR departments of good organizations. Yes, Anjali. Now you can ask questions. Thank you, ma'am. Ma'am, when company does this amount of layoff, then how they compensate their employee work? Like how they run their, like if we see at the number, these are huge. So if at the time a company does this kind of layoff, then how can they compensate their work, or how can they run their company? Because they were already involved in the work, they're not unnecessarily there present there in the company. So I See, don't sadly, understand कि जब हाँ, I Yes. tell you. So sadly क्या होता है organization के अंदर? There are only 20% people who are working at 100% productivity. Right? मतलब अगर आप 8 घंटे हो ऑर्गेनाइजेशन में तो 8 घंटे का काम वो 20% लोग ही दे रहे होते हैं ऑन एन एवरेज. बाकी के 80% एम्प्लॉयज में से आप मान लो 10-15% आर नॉट डूइंग देयर जॉब्स प्रॉपरली, कभी भी किसी भी टाइम पे, तो उनको भी छोड़ देते हैं. बचा 60% डू देयर जॉब ऑन एंड ऑफ. किसी दिन अच्छा मूड है तो बहुत अच्छा कर लिया, किसी दिन नहीं है नहीं किया, तो उनका 3-4 घंटे का काम ही चलता रहेगा. सो ऑर्गेनाइजेशंस को फर्क नहीं पड़ता इसीलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि डाउन साइजिंग एक तो वो उस टाइम पे कर रहे होते हैं जब वो इधर अपना कुछ प्रोसेस कम कर रहे हो या कुछ काम कम कर रहे हो. दैट इज़ वाई वही डिवीजन बंद कर दिया, उसके एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, इस तरीके से करते हैं. तो ऑलरेडी वो कोई डिवीजन बंद कर रहे होते हैं तो उसके एम्प्लॉयज़ उनके लिए यूजफुल नहीं रहते हैं. या अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए कर रहे होते हैं तब भी वो इन सब चीज़ों का किसी भी डाउन साइजिंग की प्लानिंग स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन 5-6 महीने से चल रहा होता है. तो उसके अंदर ये सब कॉस्ट कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें कर लिया जाता है, तभी उसके बेसिस पर डाउन साइजिंग किया जाता है. तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपकी डे टू डे वर्किंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. उनके जाने से डे टू डे वर्किंग पे इम्पैक्ट तब पड़ेगा जो एम्प्लॉयज़ बच गए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका मॉरल अगर ख़राब हो रहा है, उनका मोटिवेशन ख़राब हो रहा है. सो दैट इज़ वेयर दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजाइजिंग रियली प्लेज गुड रोल. कि या तो लोग बहुत अच्छा काम करने लगेंगे डर के मारे, या कुछ लोग इतने इनसिक्योर हो जाएंगे कि वो जो काम कर रहे थे वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे. सो यू नीड टू, एज एन HR, योर जॉब इज टू देन इंश्योर दैट दीज पीपल आर वर्किंग रियली वेल इन द कंपनी. मैम ऐसा तो नहीं हो जाता कि वो जितने लोगों को निकालते हैं उनका काम भी बचे हुए लोगों से करवा लेते हैं? हो जाता है कुछ तो बढ़ ही जाता है, बट अब जैसे मैंने बताया कि कभी भी सारे लोग 8 घंटे का काम कर ही नहीं रहे होते ऑर्गेनाइजेशन में. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ आप, किसी भी, आई हैव सीन मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कहीं पर भी हमारी मतलब आई थिंक मेरा आधा टाइम HR में इसीलिए जाता था ये देखने के लिए कि क्यों प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी 100% ऑक्यूपेंसी पे काम नहीं करता. कोई भी आपने आपको देख लो, आप कभी भी आप 8 घंटे का
सपोज एक कॉलेज में हमने क्लासेस अटेंड करनी है, क्लासेस अटेंड करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, राइट, यू हैव टू लिसन, बट फिर भी हमारा इंगेजमेंट लेवल कम होता चला जाता है क्योंकि हम हैबिचुअली नहीं है इतना लंबा टाइम के लिए कहीं पर भी बैठने के लिए. एंड दिस इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट दैट पीपल हैव इन ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर लंच आवर्स अब आप राइस खा रहे हो, बहुत सारे फूड ऐसे आइटम हैं जो स्लीपीनेस लेकर ही आते हैं, चाहे कुछ भी कर लो आप, राइट, यू वांट टू रिमेन एक्टिव, कितना एक्सरसाइज, ये सब वो सब. सो वो आफ्टर लंच आवर्स हमेशा थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. सो मैं अपने अपने आप को प्लान करने के लिए क्या करती थी कि जो बोरिंग काम है एचआर का, फॉर एग्जांपल जो रिपीटेटिव है जिसमें आपको नींद ना आए, जैसे इंटरव्यूज, सो आई ऑलवेज यूज टू कीप इंटरव्यूज आफ्टर लंच आवर्स, कि जो भी सब आलसपन आ रहा है या वट एवर लेजीनेस इज देयर वो चली जाएगी, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू पीपल कंटिन्यूसली, यू आर एंगेज्ड, so your productivity is higher, you are engaged. So your planning of the day should be this way कि आपको 8 घंटे ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि आप काम भी कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है उसका. वेरी फ्यू पीपल कैन डू दैट जो टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं. टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग योर टाइम मैनर. पढ़ा है इसको, सर ने पढ़ाया था, सर के उस वाले उसमें होगा 2 महीने वाले कोर्स में टाइम Yes, मैनेजमेंट ma'am. के लिए, राइट. सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन एनी फील्ड, एनी एरिया दैट यू आर वर्किंग. अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे अपना टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हैम्पर रहेगी. ऐसे भी एक एम्प्लॉय को 8 घंटे की ज़रूरत नहीं है अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाने की. यू कैन ईजिली डू योर डे टास्क इन 5-6 आवर्स ईजिली. सो यस, दूसरों के ऊपर थोड़ा Yes. सा काम बढ़ जाता है बट ऐसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता उसका कि 12-13 घंटे बैठे पड़े. जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी कंपनी 12-13 घंटे अपने एम्प्लॉयज़ को रख रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग जहाँ मशीन चल रही है रेगुलर, वहाँ ज़रूरत रहती है, वहाँ कल्चर ख़राब है. दे आर क्रिएटिंग अ कल्चर विच इज़ बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग टर्म. क्योंकि 12 घंटे किसी की प्रोडक्टिविटी नहीं होती, या तो वहाँ पीपल प्लीजिंग हो रही है क्योंकि बॉस बैठा है इसलिए मैं बैठा हूँ, बॉस किस लिए बैठा है, वो अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए बैठा है ऑफिस में. सो दैट इज ऑलवेज पीपल प्लीजिंग. दे आर नॉट रियली डूइंग टू मच ऑफ थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. इनफैक्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका एसी, इन सब का बिल ज़्यादा आएगा ये ज़्यादा लोग बैठेंगे, तो वहाँ पर आप कॉस्ट कंपनी की सेव कर सकते हैं. सो ये सब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में है. दैट इज आई एम सेइंग कि जब हम कॉस्ट एनालिसिस समझ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का, कि हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है, राइट, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं. अब वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें मेरा एज एन एचआर के अंदर क्या क्या हिस्सा है जहाँ पर मैं कॉस्ट कंट्रोल करके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकता हूँ. सो दैट इज स्ट्रैटेजिक एचआर, सिंपल. And cost control does not mean cost cutting. Cost control is always cost benefit analysis. कि आपको हर एक कॉस्ट पे क्या बेनिफिट आ रहा है उसके बेसिस पर आप हायर कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट दिस स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज अबाउट. कल इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं दूसरी पीपीटी से. दिस इज नॉट रियली अ गुड वन, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? No. Okay. So then we'll continue the class tomorrow, 6:15 sharp tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you Good so night. much.